Hello, dear students. So, today I have brought for you the thorough explanation of the poem Childhood from a book Hornbill. So, the poem Childhood has been composed by Markas Natten. Okay, so he's the poet, and it's a very wonderful poem by him. So, in this poem, the poet wants to know actually when he lost his childhood innocence. So, throughout the poem, he tries to find out the answer to this question as to when he lost his childhood, or in other words, the innocence of the childhood, the purity of the childhood. So, though this poem has been written in four stanzas, each stanza has 6 lines, while the last concluding stanza has 4 lines. So, the poem does not have any fixed rhyme scheme. However, in the first stanza, we can see a rhyme scheme as A, B, B, C, C, D. Okay, as 11 and heaven rhyme, whereas geography and B rhyme, whereas go and day they don't rhyme. So we can say that the rhyme scheme is A, B, B, C, C, D. I hope you understood. Well, if you look at the second stanza, it doesn't follow the same rhyme scheme as the first stanza. Like you can see that were not be love lovingly. There is no rhyme scheme like that. Okay, so modern poets do not pay attention to the rhyme scheme. They pay attention to the idea, the concept, the theme. Okay, let's start. First stanza, let's look at it. So the poet says, when did my childhood go? Was it the day I ceased to be 11? Was it the time I realized that hell and heaven could not be found in geography and therefore could not be? Was that the day? So, in this stanza, the poet puts up a question. When did my childhood go? मेरा बचपन कब चला गया? Because समवेयर ही फील्स कि उसका चाइल्डहुड चला गया है, वो वैसा फील नहीं करता जैसा कि वो चाइल्डहुड में करता था. Now he makes a lot of guesses. Like first guess he makes it, क्या वो समय वह था जब when I ceased to be 11? Cease means stop. तो जब वो 12 साल का हो गया था. Was it the time I realized that hell and heaven could not be found in geography and therefore could not be? क्या ये समय, क्या ये वो वक्त था जब मुझे ये समझ आने लगा कि हेल और हेवन जो है, चूँकि जियोग्राफी बुक में नहीं है, तो इनका कोई अस्तित्व नहीं है, उनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, बिकॉज दे आर नॉट देयर ऑन द जियोग्राफी बुक. So there are no such places as heaven and hell. So children, इसको हम बोल सकते हैं rationality. Rationality, तो first stanza deals with rationality. It all boils down to rationality. तो he has become rational. He started using his rationale. अपना कॉमन सेंस यूज़ करना सीख गया है, वो रैशनल हो गया है, रीज़न करने लगा है वो कि हेल और हेवन जैसी कोई जगह नहीं है. जैसे बचपन में मुझे लगता था कि हेल एक जगह है, हेवन एक प्लेस है, बट अब उसे लगता है कि हेल एंड हेवन हो ही नहीं सकता क्योंकि तो जियोग्राफी में नहीं है. बिकॉज एजुकेशन हैज़ मेड हिम अवेयर एंड ही हैज़ नाउ अंडरस्टूड द रियलिटी. So now he is able to differentiate between the truth and the falsehood.
it was not possible for him to differentiate between the truth and the falsehood, the reality and the fantasy when he was a child. So he feels कि maybe when I began to use my rationale, maybe the day when I lost my childhood, maybe when I turned 12, maybe it was the day because it was the time around when I started using my rational power. I started reasoning with things. I started contradicting because on my mind some certain things were not fitting. So I was just kind of ruling them out. I was kind of invalidating certain things which I used to think when I was a child. So, dear student, the first stanza deals with the rationality. Okay, let's move on to the next stanza. When did my childhood go? Was it the time I realized that adults were not all they seemed to be? They talked of love and freezed up love, but did not act so lovingly. Was that the day? So, students, children, in the second stanza, he is actually talking about the adults, the behavior of the adults, the conduct, you know. So he says that when he was a child, he had a very high opinion of his adults, his parents, his relatives, neighbors, as they used to instruct him that love should be done. Love karna chahiye, love is important, do not hate, do not fight with others, love your brother, love your sister, love your mother, love your father, love the children, love animals, do not hate them, do not hurt them, love everybody, love is important. And as a child I realized that yes, love was important because my parents, all adults were preaching me of love. So somewhere or other love is important, and he had a very high opinion of his adults कि कितने अच्छे लोग होते हैं adults, लव की बात करते हैं. But when he grew up and when he lost his childhood, maybe somewhere, he realized कि what he used to think in a childhood about his adults was not fully correct, because he realized that adults who used to preach for love actually themselves don't love. They fight with each other, they hate each other, they are jealous of each other, they envy each other, they are not so lovingly. सो उसे उनकी हिपोक्रेसी के बारे में पता चला, एडल्ट्स की हिपोक्रेसी, उनकी डबल फेसेड मैनर, उनका जो फ्लिप साइड का पता चला कि ऐसा नहीं है. तो पॉइंट गेस कर रहा है कि शायद जब मैं ये समझ गया कि जो एडल्ट्स हैं वो हिपोक्रेट होते हैं, शायद तब मुझे पता चला कि अब मैं बच्चा नहीं हूँ, मैं समझदार हो गया हूँ. अब मैं लोगों की हिपोक्रेसी को समझने लगा हूँ. अब मैं बच्चा नहीं रहा. सो शायद वही दिन था जब मेरा बचपन चला गया. So in the second stanza, he talks about the efficacy of the grown-ups, adults. Moving on to the third stanza, he again puts up the question, where did my childhood go? Was it when I found my mind was really mine? To use whichever way I choose, producing thoughts that were not those of others, other people, but my own and mine alone? Was that the day? So in the third stanza,
The poet makes another guess. He says, maybe I lost the childhood when I realized that I was an individual. I had my own thoughts, I had my own opinion. मेरी खुद की opinion, मेरे खुद के विचार हैं, और मैं अपने खुद के विचार लोगों के सामने रख सकता हूँ, मैं अपनी राय को लोगों के सामने रख सकता हूँ. इट्स नॉट नेसेसरी दैट आई शुड ऑलवेज फॉलो what other people's opinion is, what they think. I can have my own opinion, my own thinking, and I can do accordingly. क्या ये वही समय था जब मैं अपना बचपन खो चुका था? सो हियर द पॉइंट इज टॉकिंग अबाउट द इंडिविजुअलिटी. एक अपने इंडिविजुअलिटी के बारे में बात कर रहा है कि मैं अपने आप को एक इंडिविजुअल बंदा समझने लगा हूँ. आई हैव अ पर्सनैलिटी, आई एम डिफरेंट, आई हैव माई ओन थाट्स. बट एज अ चाइल्ड ऐसा नहीं था. उनकी कोई इंडिविजुअलिटी नहीं थी, खुद की ओपिनियन नहीं थी, खुद की कोई परसेप्शन, थिंकिंग, आइडियोलॉजी नहीं थी. उसको वही करना पड़ता था जो उसके पेरेंट्स या जो एडल्ट्स उसको करने के लिए कहते थे. वो खुद सोच नहीं सकता था, खुद के थॉट्स प्रोड्यूस नहीं कर सकता था. बट नाउ ही कैन प्रोड्यूस हिज ओन थॉट्स एंड ही अंडरस्टैंड्स हिमसेल्फ एज अ डिफरेंट ह्यूमन बीइंग, यूनिक ह्यूमन बीइंग. तो शायद ये वही समय है जब उसने अपना चाइल्डहुड खो दिया. मे बी. सो नाउ लास्ट स्टैंजा. वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो? इट वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस दैट्स रिटन इन एन इन्फेंट्स फेस. दैट्स ऑल आई नो. इस लास्ट स्टैंजा में जो क्वेश्चन है वो चेंज हो गया है फ्रॉम व्हेन टू वेयर. और यहाँ एक 4 लाइन का स्टैंजा है और इसमें राइम स्कीम है ABBC. गो राइम्स विद नो एंड प्लेस विद फेस. सो यहाँ वो क्वेश्चन कर रहा है कि कहाँ गया मेरा बचपन. मैंने बहुत सारे गेसेस किए कि कब गया होगा, लेकिन वो जाने के बाद कहाँ चला गया बचपन, कहाँ है अभी वो कहता है कि इट वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस. ये किसी ऐसी जगह चला गया है जिसे भूल चुका हूँ मैं कहाँ है वो. दैट्स हिडन इन इन्फेंट्स फेस, जो कि एक इन्फेंट्स के फेस में छुपा हुआ है. वो कहता है उसे पता है कि वो बचपन कहाँ चला गया, वो इन्फेंट्स के चेहरे में है. नाउ पॉइंट इज कि वाई द पोएट इज कंपेयरिंग हिज वाई द पोएट इज सेइंग दैट हिज चाइल्डहुड इज हिडन इन एन इन्फेंट्स फेस. ऐसा क्यों कह रहा है कि वो एक इन्फेंट यानी कि शिशु के चेहरे में छुप गया है? क्योंकि जो शिशु होता है, इन्फेंट होता है, उसका जो चेहरा होता है वो उसके अंदर वो सब कुछ है जो एक चाइल्ड के अंदर होता है. वो इनोसेंट होता है, उसके चेहरे पर प्योरिटी होती है, उसकी स्माइल फेक नहीं होती, वो एक रियल स्माइल होती है. इट डज नॉट नीड एनी रीज़न टू लाफ, टू क्राई, टू स्माइल. ही इज़ वेरी इनोसेंट. ही इज़ अनअवेयर ऑफ एनी फियर, एनी हिपोक्रेसी, any individuality, any rationale. So I think infant is a symbol of childhood. He is very pure, like God. No envy, no hatred, no double-facedness, nothing. Just a simple human being. That is the purity of a childhood. So, in this poem, the poet tries to find out about his childhood, which is the most beautiful phase of a person's life. And I think I can safely compare the child to having human qualities, to godly qualities, to having the qualities like God. He is innocent. He doesn't know the difference between the poor and the rich, the good and the bad.
he sees everybody with one eye. Okay, so that is the end of this poem. Now let's quickly look at the poetic devices used in this poem. तो सबसे पहले मैं बात करूँगा refrain की. As you can see in this poem, when did my childhood go has been repeated thrice in the entire poem. So when there is a repetition of the single line, same type of line, it is called refrain. REFRAIN, refrain. And hell and heaven, it is called antithesis because both the words are opposite. So antithesis is this is an example of antithesis. And hell and heaven, या alliteration भी बोल सकते हैं because they both are starting with letter H. और वॉज इट द डे, वॉज इट द टाइम, बहुत से दो लाइन शुरू हुई हैं, तो ये एनाफोरा है बिकॉज जब दो लाइनों के अंदर सेम वर्ड होता है तो वो एनाफोरा का एग्जाम्पल होता है. एंड इसमें एलिट्रेशन के और भी एग्जाम्पल आप ट्रेस कर सकते हैं, जैसे माई माइंड, रिपीटेशन ऑफ मा साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड. So it is an example of alliteration. So हमने देखा यहाँ refrain है, alliteration है, antithesis है, and I can also see inversion भी देख सकते हैं. To use whichever way I choose, जब हम वर्डों का प्रयोग उल्टी तरीके से करते हैं वो कहलाता है इन्वर्शन. तो ये सेंटेंस है, आई चूज टू यूज विच एवर वे आई. सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इन्वर्शन. सो दिस इज द एंड ऑफ दिस पोएम. थैंक यू एवरीबॉडी. इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज press the like button, and if you want such informative and useful videos for you, subscribe to my channel. Thank you, and please send a feedback how I can improve upon and what other things I can add, and you can also write on what subject or topics you want the videos. Thank you.